question number 14 of the worksheet, which is the first term of an AP is 8. The common difference is D. The first term and the fifth term and the eighth term of this AP are the first term, second term, and third term, respectively, of a geometric progression. Okay, so the first term of the AP is going to be A. The first term is A. The fifth term, what's going to be the expression for the fifth term of an arithmetic progression? बता सकते हो? Miss 8 plus 4D. Okay, we're given the first term. Sorry, I missed that. So the first term is going to be 8. The fifth term is going to be A plus n minus 1D. So A plus 5 minus 1, which is 4D. Good. Okay. And the eighth term, Azhar, eighth term batao. एट पहली टर्म 8 है ना? हमको एट प्लस एन टर्म का फॉर्मूला बताना एपी का एपी का ए प्लस डी इंटू एन माइनस वन। ठीक है, तो अब इसको अप्लाई कर दो ना फॉर द एट्थ टर्म। क्या हो जाएगा ये? ए इज ऑलरेडी 8। हाँ, 8 plus d into 8 minus 1 plus 7d. so 8 plus 7. Alright, so the eighth term is 8 plus 7d. Okay. Now these three are the first three terms of a geometric progression. Write down two equations connecting D and R. Alright. So एक तो AP हमें पता है, which is given in blue, और एक GP पता है, which is for part 1. GP is the first term is 8, the second term is 8 plus 4D, and the third term is 8 plus 7D. Okay. Write down two equations connecting D and R. कैसे आएंगी two equations connecting D and R? D तो हमें नजर आ रहा है, 8 plus 4D में एक D है, 8 plus 7D में D है। R किधर है इधर? वो Miss b upon a वाला plus 8. एक से अजहर की मैं पहले बात सुनती हूँ क्योंकि उसने पहले बोलना शुरू किया था। जी, R किधर है अजहर? हम वो 8 plus 4d divided by 8 करके। हाँ, एक इक्वेशन तो ऐसे आ गई। R जो है इट्स गोइंग टू बी 8 plus 4D upon 8, और दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी? दो इक्वेशन बनानी है। 8 Write down is two. equals to 8 plus 7d upon 8 plus 4d. ठीक है, R is equals to 8 plus 7D upon 8 plus 4D. All right. We're going to form two equations that have both R and D and then solve it. उससे R 3/4 आना चाहिए और D की वैल्यू आपने खुद निकाली. All right, so let's simplify these. We have 8R is equals to 8 plus 4D. I'm going to simplify this as well, divide both sides with 4. So I'm getting 2R equals 2 plus D, equation 1. And equation 2 is this. You have, let's call this equation 2 right here without even simplifying it. Can you solve these simultaneously and show that R is 3/4 and find the value of D? कैसे करेंगे? और 2r minus 2 is equals to d और फिर the substitute करना। चलो that would work. करके देखते हैं, इससे quadratic equation लगता है बन रही है. Let's see. 2R
-2 is equals to D. ये आप कह रहे हो. Let's try substituting it there. Okay, let's see how that goes. 2R -2 equals, अच्छा नहीं, D की जगह ये लिखना है. So R equals 8 plus 7 2R -2 upon 8 plus 4 2R -2. Right. Okay, so we're getting R equals 8 plus 14R -14 upon 8 plus 8R -8. So we have R equals 14R -6 and upon 8R. So we're getting 8R square minus 14R plus 6 is equals to 0. You may use the quadratic formula or you may use middle term breaking, but you must show your complete working. करके बताना. जो भी कर रहे हो, मिडिल टर्म ब्रेकिंग और कंप्लीटिंग स्क्वायर, सॉरी कंप्लीटिंग स्क्वायर तो मुश्किल ही आप करो. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मुझे बताओ कि आर की क्या वैल्यूज आ रही. It will help if we divide both sides with 2 first. So 4R square minus 7R plus 3 is equals to 0. Do middle term breaking. मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? मिस 12 हाँ, और ऐड करके -7. से 1 आए और एक 4 आए. एक R1 आ गया आपका और एक आया 3/4. ठीक है तो ठीक है. अब मुझे बताओ, क्या जीपी में R कभी 1 हो सकता है? जैसे अगर फर्स्ट टर्म 3 है, R अगर 1 हो गया तो अगली टर्म क्या होगी? मिस 3. और नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 3. नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 3. तो दिस इज नॉट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. It stays the same. It's not a series. It's just 3, 3, 3, 3, 3. So R can never be 1 in a geometric progression. Not possible. Okay, so R1 is not possible. So the only value is R is equals to 3/4. So R aa gaya. Now please put it back in one of the two equations, preferably the linear one. इसमें put करके find the value of T. What are we getting for D? मिस -1/2. All right. So D is -12. ठीक है. Part 2. ठीक है सर. ऐसे
Part 2 says find the sum to infinity of the geometric progression. So geometric progression क्या थी ये? We have to find the sum to infinity. Sum to infinity का formula क्या होता है? A/1 minus one. Good. So sum to infinity is a upon 1 minus r. What is a and what is r? ये आपकी जीपी लिखी हुई है in terms of d. इसमें से आप a बता सकते हो. What is a? Plus 8. और r भी आप निकाल चुके हो part 1 में, which is 3/4. तो बताओ what's the sum to infinity? $32. Part 3. Find the sum of the first 8 terms of the arithmetic progression. So, what's the formula for sum of n terms in an AP? Plus n over 2 plus Times 2 n over 2 um times 2a. n over into 2a plus n minus 1 into 3. Yes, plus 3 times n minus. Take it. All right. So we have to find sum of the first 8 terms. So n is going to be what, Azhar? 8. 8 over 2 times 2 times a. What is a? Arithmetic. Question के 8. start में लिखा हुआ है. हाँ, 8 ही है. The first term of an AP is 8. So 2 times 8. D क्या होगा? 8 नहीं D हमने निकाला था कहीं हाफ आया था, माइनस हाफ, माइनस हाफ. नेगेटिव. हाँ. So plus की जगह I'm going to write negative half. और n minus 1 की जगह क्या लिखेंगे? 7. Yes, ठीक है. Now give me the sum of the first 8 terms. $78. 50 है आंसर. GMS 50 आ गया. अजहर दोबारा चेक करो. मैंने पॉजिटिव हाफ कर दिया था. ठीक है, so 50. Start question number 15 and I don't think I'll get to finish it. So you'll finish 15 as homework and question number 16. Okay. A geometric progression has first term 100. So A is 100. And sum to infinity is 2000. Find the second term. क्या करेंगे तब? मिस वो जो फॉर्मूला था a into r to the power n minus 1. वो किस चीज का फॉर्मूला है? a पावर r n minus 1. किस चीज का फॉर्मूला? मिस nth टर्म का. अच्छा, तो nth टर्म का फॉर्मूला हम यूज अगर करते हैं तो उससे हमारे पास क्या है? आर तो नहीं हमारे पास. r निकल आएगा. कैसे? नहीं, आर हमारे पास नहीं है. हाँ, हमारे पास r नहीं है, सही कह रहे हो.
R होता तो हम हमारे पास A भी है, हम R सब्स्टिट्यूट करके सेकेंड टर्म U2 निकाल लेते। देखो S इंफिनिटी भी तो गिवन है ना हमें क्वेश्चन में, तो उसका भी तो यूज होगा। उसका क्या यूज होगा? उसका फॉर्मूला लगा कर 2000 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 100 अपॉन 1 माइनस आर कर दें। बिल्कुल सही। S इंफिनिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको इक्वल्स 2000 कर देंगे। So A upon 1 minus R is 2000 and A is 100. So find R here. Tell me what R is. जीरो पॉइंट नाइन फाइव। फ्रैक्शन में आंसर नहीं आता। 19/20। हाँ ठीक है। I have 19 by 20 written with. ठीक है। R comes out to be 19 by 20. But the question is find the second term. How do we find the second term? आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है। and You may use this formula. वैसे तो इससे ज्यादा आसान क्या काम है? अगर फर्स्ट टर्म पता है और R भी पता है इंटू multiply it. 9। क्या कर देते हैं? हाँ, let's just do that. So we know the first term, which is 100 times R. 55। 55. Sorry, what? 95. 95। सही। Okay. Part A हो गया। Part B. Part 1. Find the an arithmetic progression has a third term 90 and the fifth term 80. Find the first term and the common difference. How do we start this question? Third term is 90, fifth term is 80. आपसे कहा है A बताएं और D बताएं। Third term is 90, fifth term is 80. Third term का फॉर्मूला क्या होगा? -5 का मैं डिफरेंस होगा। फॉर्मूला में डाल के निकाल लेंगे। हाँ, फॉर्मूला में डालेंगे और साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है। वैसे ये भी सही कह रहे हो कि -5 का डिफरेंस होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये भी डायरेक्टली पता चल रहा है दैट D is going to be -5. So the common difference तो आ गया। फर्स्ट टर्म कैसे आएगी? What's going to be the first term? So without any working, you can find the common difference. First term would be एक। थर्ड टर्म में 5 5 कम होता जा रहा है ना, तो थर्ड 100। टर्म 90 है। हाँ,